Pig iron, it is the crude from the iron and it is used as a raw material for the production of various other ferrous metals such as cast iron, wrought iron and steel. The pig iron जो हमें मिलता है वो pig iron is obtained by smelting iron ores into a blast furnace, and their classification, that is iron ore, three classification, that is जो पहला है आपका as oxide based, second as carbonate and third as your as sulfides. Oxides की जब बात करते हैं तो there are three major classification, that is magnetite, hematite and limonite. तो मैग्नाइट की बात करते हैं तो Fe3O4, हेमेटाइट की बात करेंगे तो Fe2O3 एंड लेमोनाइट की बात करेंगे तो Fe2O3.H2O या Fe2O3H2O. These are the iron ore classification as per oxide. तो क्या क्या पूरा करना है, मैग्नाइट होता है, हेमेटाइट होता है एंड लेमोनाइट होता है. एंड फर्दर आयरन ओर में नेक्स्ट है दैट इज आपका एज कार्बोनेट्स, और कार्बोनेट्स की बात करेंगे तो सिडराइट यानी FeCO3. और फिर नेक्स्ट दैट इज एज सल्फाइड में भी इस बात करेंगे तो पायराइट, PYRIT पायराइट, दैट इज सिंबल इज FeS2. नेक्स्ट दैट इज मेटालिक आयरन इन आयरन ores, that is iron ores, colors and iron content percentage. सो याद करने की कोशिश करेंगे. तो जब बात करेंगे आयरन ओर में मैग्नेटाइट की, आयरन ओर है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट एंड सिडराइट. तो मैग्नेटाइट यहाँ पे कलर जो होगा उसका ब्लैक कलर का होगा और जो आयरन कंटेंट के परसेंटेज होगा वो 72% होगा. इसी तरह सेकेंड है आपका हेमेटाइट, इसका कलर जो होगा वो रेड होगा और आयरन कंटेंट की वैल्यू होगी वो 70 होगी. नेक्स्ट दैट इज लिमोनाइट, कलर हो जाएगा इसका ब्राउन और इसकी आयरन कंटेंट की जो वैल्यू होगी वो 60 to 65 होगी. एंड नेक्स्ट देखिए हमारा सिडेराइट है जिसका कलर ब्राउन है. तो दो हो गए ब्राउन, लिमोनाइट और सिडेराइट हमारे ब्राउन के हो गए, मैग्नाइट ब्लैक हो गया और हेमेटाइट रेड हो गया. और सबसे ज़्यादा कंटेंट जो परसेंटेज है वो मैग्नाइट में ही पाया जाता है 72, और फिर उसके हेमेटाइट में 70, और फिर लिमोनाइट में 60 से 65 और सिडेराइट में 48%. फर्दर इसको क्लासीफाई करा जाता है तो हम देखते हैं कि हेमेटाइट इज वाइडली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन. Since pyrite consists only 30 to 40% iron, therefore it is not used for manufacturing pig iron. क्या क्या properties हैं? That is, the pig iron is obtained from the iron ores in the following steps. पहला concentration. It is the process of removing the impurities. कौन कौन सी impurities? जैसे कि clay हो गया, sand हो गया, and other impurities from the iron ore by washing the. तो पहला हो गया concentration. It is a process of removing the impurities like clay, sand, etc. from the iron ore by washing with water. Second, that is your calination या roasting process. During this process, it is a process of expelling moisture, carbon dioxide, sulfur and arsenic from the iron ore by heating in shallow links. This is the property that is behind calcination या roasting. इसमें क्या होगा? This is a process of expelling moisture, carbon dioxide, sulfur and arsenic from the iron ore by the heating in shallow link. Cleanse. थर्ड प्रॉपर्टी आता है दैट इज योर स्मेल्टिंग. जब बात करते हैं स्मेल्टिंग की तो इट इज द प्रोसेस ऑफ reduce the ore with the carbon in the presence of flux, and thus something is carried out in large tower called blast furnace. तो blast furnace
जैसे जल्दी नोन आप नोन जानते हैं ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस का एक चिमनी लाइक स्ट्रक्चर है मेड ऑफ हैवी स्टील प्लेट्स की लाइन इनसाइड द फायर और bricks into a thickness of 1.25 meter, which is about 30 meters high at the maximum internal diameter of the 9 meters, and it is very widest cross section. The portion of the furnace above its widest cross section is called. तो इसका हमने डायमीटर देखा है यहाँ पर 1.2 से 1.2 से 1.5 मीटर एंड इज अबाउट 30 meters high at the maximum internal diameter of the 9 meters at the widest cross section, and the portion of the furnace above its widest cross section is called stack. The topmost portion of the stack is called throat and through which the charge is fed into the zone, जिसको हम बोलते हैं zone of fusion. The boss is provided with the hostels for the number of the portion of the furnace below its widest cross section is known as boss of the burning zone, इसको बोलते हैं zone of fusion भी. और the bush is provided with the holes of number of water jacket iron blowing pipes known as tires, and the tires are 12 to 15 in number and are connected to Bristol pipe surrounded in the furnace. इसका जो लोअर पार्ट होता है, लोअर पार्ट की हम बात करते हैं फर्नेस की, तो उसको बोलते हैं जोन ऑफ फ्यूजन, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 1200 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस 1300 डिग्री सेल्सियस होता है. और मिडल पार्ट फर्नेस का कहलाता है जोन ऑफ एब्जॉर्बेशन, और इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस होता है. और अपर पार्ट ऑफ द फर्नेस का कहलाता है जोन ऑफ रिडक्शन, जोन ऑफ रिडक्शन, इसका टेम्परेचर जो होता है वो 400 से 700 डिग्री सेल्सियस होता है. जैसे तीन पार्ट हो गया, लोअर पार्ट फर्नेस का जिसमें 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस, मिडिल पार्ट हो गया जिसमें 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस, और अपर पार्ट हो गया जिसमें कि जो टेम्परेचर रेंज है वो 400 से 700 डिग्री सेल्सियस के बीच में. तो जो बॉटम ऑफ द फर्नेस है वो द मोल्टन आयरन स्निक डाउन while the above the floats and fusible stage which protects the molten iron from oxidation, and the molten iron thus produced known as pig iron. और इसका जो slag है, the slag from the blast furnace consists of calcium, aluminum and ferrous silicates. It is used as a blast for railroads, mixed with tar for road making and cement manufacture. तो pig iron में from the blast furnace contains 90 to 92% 90 to 90 से लेकर 92% of iron होता है. और the various other elements present in pig iron जैसे कि कार्बन 1 से 5%, सिलिकॉन 1 से 2%, मैग्नीज 1 से 2%, सल्फर एंड फास्फोरस 1 से 2%. And they are not important, that is your carbon play as an important role in the iron. It exists in iron in two form, that is either in free form or combined form. The presence of free carbon in iron imparts softness and a coarse crystalline structure of the metal, while the combined carbon takes place the metal hard and gives a fine grained crystalline structure. तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि किस तरह से पिग आयरन को क्लासिफाई किया गया था. पिग आयरन को एट एज ऑक्साइड, फिर एज कार्बोनेट, फिर एज सल्फाइड्स, जिसमें कि हम लोगों ने ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड्स पढ़ा. फिर इसके कलर के बारे में, आयरन कार्बन परसेंटेज के बारे में पढ़ा, एंड देयर आर सम प्रॉपर्टीज.